कुछ कुछ सीन में तो मैं टेबल था बहुत बड़ा तो उसमें हंसते हंसते गिर गई थी. Realize that if there's Sanya in some movie, then you know कुछ ना कुछ तो होगा वो पिक्चर में. अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं. हमारी लाइफ के शादी.com. औचित तो शुरू से ही एक हिंदी फिल्म बनाने का था जो कि साउथ इंडिया में सेट है. पिछले कई सालों से एक थोड़ा सा एक मन उकता गया, एक फटीक सा आ गया है कि यार हर एक तीसरी कहानी या तो यूपी में या दिल्ली में या राजस्थान, पंजाब. हाय, मैं हूँ अभिमन्यु. हाय, मैं हूँ विवेक सोनी. हाय, मैं हूँ सान्या मल्होत्रा और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ. और बताओ स्तुति. और बताओ. This is my pet peeve and I'm the one who's supposed to ask this. Okay, क्या नहीं है भैया ट्रेलर में? Arranged marriage, long distance, प्यार में दिक्कतें, रिश्तों में कॉम्प्लिकेशन, सब अभी तक हम थोड़ा बहुत समझ चुके हैं. फिल्म हमने देखी नहीं है. But Sanya, I want to start with you as preparing for the interview. 2016 दंगल was जब आपकी पहली फिल्म आई और तब से लेके अभी तक क्या फिल्मोग्राफी है आपकी? Okay, touch wood, but it's so interesting. हर तरीके के अलग-अलग किरदार आप निभा चुके हैं. अब have you understood, वो कहते हैं ना इंस्टिंक्ट होता है एक एक्टर का कि वो स्क्रिप्ट सुन के समझ जाता है कि इसको हाँ बोलना या नहीं बोलना. वो उस लेवल तक पहुंच गए हो आप? हाँ, पहुंच गई हूँ. अब वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है कि खुद की सुन सकती हूँ. पहले थोड़ा होती थी, I used to doubt myself, but now I'm थोड़ा आ गया, थोड़ा कॉन्फिडेंस है. So you know the next obvious question of course is कि विवेक की फिल्म आपने हाँ क्यों बोला? What was it about मीनाक्षी that you liked so much? मीनाक्षी के लिए हाँ, तो मतलब मैं बहुत ही अच्छी नरेशन हुई थी मेरी. विवेक ने नरेट करी थी मुझे स्क्रिप्ट एंड आई वाज सो एंटरटेन्ड. आई रिमेम्बर कुछ सीन में तो मैं टेबल था बहुत बड़ा तो उसमें हंसते हंसते गिर गई थी. मुझे बहुत एंटरटेनिंग लगी थी और मुझे वैसे भी लव स्टोरीज देखना बहुत पसंद है, रोमांटिक फिल्म देखना मुझे बहुत पसंद है. और बहुत टाइम से एज एन ऑडियंस आई वाज क्रेविंग कि कुछ ऐसा है जिसको मैं देखूं और मजे हो. मुझे लगता है एज एन एक्टर मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला टू बी इन इट, तो मैं कभी मना नहीं करती. और विवेक के साथ काम करना, क्योंकि वो नरेशन में पता चल गया था कि हाउ कनेक्टेड ही इज टू द फिल्म एंड टू द कैरेक्टर्स, एंड आई रियली वांटेड टू वर्क विद हिम. क्योंकि actually I'm so glad I worked with him because I learned a lot. छोटी-छोटी चीजें मैंने बहुत सीखी हैं विवेक से इस फिल्म के दौरान. Your film मर्द को दर्द नहीं होता बोलते ही we have a smile on our face. It was such an impressive debut, but then आप थोड़ा रुके और उसके बाद मैंने आपको इसमें देखा. It almost felt like you kind of waited it out till you got a role which wasn't how we first saw you. Was this a conscious choice? I mean, we all waited because of the pandemic. Okay. But yes, choosing this was a conscious decision. I've mentioned it earlier, I don't like to be boxed in, in a certain type of genre category or in a certain type of judgment. So as an actor, I would like to break the box every time you put me in a box. And with this character, I've got the opportunity with this team to elevate that status and challenge myself, try something new, and hopefully leave you guys smiling a little more. Super. Vivek, I hope you're on my side क्योंकि हम actors को promotion के दौरान जब भी interview करते हैं, so there are such nice things to say about each other और सबको बहुत अच्छा लगा काम करके और कोई एक साथ बैठ के तो कोई बोलेगा नहीं. But you tell me, you included both of them in your project. You clearly are impressed. और अब curiosity questions हमारा high है looking at the trailer. But what were some of the things that you kept in mind? Because एक बहुत distinct southern flavor है इसका. उस authenticity को maintain करते हुए how do you proceed? So ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था जब मैं अपने को-राइटर अर्श के साथ जब हम कहानी लिख रहे थे. तो ये सुर हमने ऑलरेडी इख्तियार कर लिया था कि ये हिंदी फिल्म है which is set in तमिलनाडु. जैसे अगर कोई फिल्म राजस्थान में स्थित है तो वहाँ पे फ्लेवर तौर पे कुछ राजस्थानी अल्फाज होंगे, शब्द होंगे, क्योंकि तमिलनाडु का डायलेक्ट इतना डिफरेंट है तो वहाँ पे इवन इफ यू हैव डायलेक्ट इन राजस्थान और पंजाब व्हाटएवर इट इज, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्टेक्स्ट इज. अगर पंजाब में भी अगर आप उड़ता पंजाब में भी पंजाबी सुनेंगे तो मतलब ऐसा आप एलियनेट नहीं होंगे, ऐसा नहीं होगा कि यार समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं. बट सिंस साउथ का जो डायलेक्ट इज सो डिफरेंट, सो ईदर यू गो ऑल आउट and keep it in Tamil, then it will become a regional film.
जो कि कोई खराब बात नहीं है, बहुत ही खूबसूरत काम हो रहा है वहाँ पे। बट मेरा औचित्य शुरू से ही एक हिंदी फिल्म बनाने का था जो कि साउथ इंडिया में सेट है, और वो उस वजह से आया बिकॉज पिछले कई सालों से एक थोड़ा सा एक मन उगता गया, एक फटीक सा आ गया है कि यार हर एक तीसरी कहानी या तो यूपी में या दिल्ली में या राजस्थान, पंजाब, तो एक इन ऑर्डर टू ब्रेक दैट क्लटर कि कुछ एक विजुअली थोड़ा डिफरेंट लैंडस्केप एक्सप्लोर करें जो कि हमारे हिंदी सिनेमा में इतना किया नहीं गया है. सो दैट वाज द रीजन व्हाई वी शिफ्टेड टू, एंड व्हेन वी डिड दैट वी वर ऑलवेज क्लियर कि इट्स अ हिंदी फिल्म सेट इन तमिलनाडु. So and और उसी हिसाब से we kind of prepared for it, and जो भी तमिल थोड़ी बहुत है जो किरदार for the sake of flavor कह रहे हैं वो खाली तमिल कह रहे हैं, प्रॉपर तमिल कह रहे हैं, वहाँ तो कोई एक्सेंट नहीं है, और जब वो हिंदी बात कर रहे हैं प्रॉपर हिंदी बात कर रहे हैं. So ये जो सुर था हमने शुरुआत से पकड़ा था और इसी को पकड़ के हम पूरी फिल्म में I mean this is how we went about it. चाहे या ना अनचाहे, but because of the pandemic कई लोगों का long distance relationship हो चुका है, whether we like it or not. आप दोनों this question is directed to Abhimanyu and Sanya. लोग कहते हैं कि obviously as an actor you kind of tap into your real life experience. तो arranged marriage तो नहीं हुई, उसमें सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, but long distance, how did you guys handle it in real life, and were there some aspects that you brought into the film? Yeah, I had a long distance relationship a couple of years ago, and it was all good while it lasted. But yeah, bringing personal experiences into the fold when you're acting is an amazing way of getting out the real emotions that are within you. But it's also it can be tough if you go into a spiral of overthinking certain situations in your life. It can affect performance in a negative way. तो वो ध्यान रखते थोड़ा बहुत, yes, I tapped into some of the emotions that I felt in that experience. But we lived through the character because of the pandemic. We had an extensive time to do our research and to live with the character for a while before we go on set, right. Which doesn't happen so often. You don't get that time. You're jumping from one film to another film. That kind of there's always a hangover of the last character that is within you, वो जो ज़हन में fit हो जाता है. So that I think we had the opportunity of disconnecting from that and living with the character and the emotion and feel them for a while, and that I guess helped juice out whatever Vivek wanted to juice out from us. I think Abhimanyu said this beautifully कि एक hangover रह जाता है, and I'm glad वो थोड़ा सा जो time period मिला for us to disconnect from our earlier characters was really helpful for me to get closer to Meenakshi. और मैंने भी experience किया है long distance. I'm not as good as Meenakshi Sundareshwar, but I wish Meenakshi Sundareshwar अगर पहले बनती तो मैं शायद I would have taken some tips from them. Oh, okay. For a successful long distance relationship. या script पहले मिलती तो शायद कुछ मैं हाँ. But this definitely मतलब वो थोड़ा बहुत तो मतलब as Vivek said, it's a universal thing. Everybody will relate to it क्योंकि कभी ना कभी मतलब पैंडेमिक के दौरान भी लोग थे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, तो सब रिलेट कर पाएंगे इन कैरेक्टर से. सिमिलरली मैंने भी किया मीनाक्षी और सुंदरेश्वर से, which was really helpful कुछ सिचुएशन और कुछ सीन्स में. Vivek, on set, two young dynamic actors, बहुत बात होती है about whether somebody is a director's actor or not. What's your style like, and how did you ensure that you managed to glean out the best from both of them? So दोनों ही बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही in terms of the way they understand the character is so beautiful. So इतना मुझे struggle नहीं हुआ, to be very honest with you. And also when I had written the characters Meenakshi and Sundareshwar, so they really fit the part. So for me it's very important जो किरदार लिखा है उसकी physicality in terms of the aura that person has. अगर if it really matches, then 40% of my job is done. Then I just have to ensure that emotionally I have to take him or her close to the character which I have written, because emotionality wise something we can figure, but at least in terms of look, हाँ यार किरदार बैठ जाता है.
So they both fit the part really well. And then when we started working, so my first process was always working on the body language, because I love observing the body language, so to say, which we often don't milk properly, because क्या होता है कि सारा जो scene का जो बोझ होता है ना, वो actor के close-up के ऊपर बांध दिया जाता है, कि सब emotion वहीं से emote होना चाहिए. I rather यहाँ से, so I rather prefer कि because क्या होता है कि जब आप जिस state of mind में होते हैं, आपकी body भी अलग तरीके से react करती है. अगर मैं confident हूँ तो अलग तरीके से खड़ा हूँ, अगर मैं tensed हूँ तो अलग तरीके से चलूंगा. So ये छोटी-छोटी बारीक चीजें होती है, उसका एक अलग अपना मजा होता है, So उन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की, तो बॉडी लैंग्वेज पे काम किया इन टर्म्स ऑफ इस सीन में कैसे क्या रिएक्ट होगा, और उस हिसाब से फिर हमने शूट भी किया है. क्लोजअप वहीं रखा है जहाँ पे अभी इसकी जरूरत है. नहीं तो लॉन्ग शॉट में खेलते हैं ना, वो मीनाक्षी अभी कैसे खड़ी होगी जब उसको फर्स्ट टाइम पता चलता है अच्छा ऐसा है, तो बॉडीली हाउ विल शी रिएक्ट और हाउ सुंदर विल रिएक्ट टू इट. काफी तारीफें हो गई हैं अभिमन्यु, सान्या. I saw your expressions. You guys were like, I'm sure you're used to this now, the bit where your director is claiming to everyone that he was very happy with your work. But how did you guys manage the tuning? Because for a film like this, it is important कि एक personal level पे एक comfort level हो, that you guys understand, the unsaid, as they say, because that is what will help you also work on screen. Did you guys know each other pehle se, and how was that whole bit of getting to know each other? Sanya, Abhimanyu? Yes, we know each other pehle se. He has worked with Radhika Madan, my badku. So we got to meet when Mard was releasing. Right. And I was so impressed when I saw him on screen. I remember I loved that movie. I loved his performance in it. So when I got to know that we'll be in this one together, I was really excited, because these are two very different characters, and I'm like, it shows, मतलब दिखता है कि कितना potential है हमारे अभिमन्यु दसानी में. Like he can play a character like Surya, who's so like high, like he's not high, like action, but he's so. We have to be very careful with the word. And then this one, Sundareshwar, is so like reticent and shy. So it shows how like he's a wonderful actor. So, or writing, and Vivek was always there to like help us. पूरा टाइम ना हम दोनों का हाथ पकड़ के विवेक हमें चला रहे थे, मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को. So that was really helpful too. So he was the one who arranged this marriage. Abhimanyu? हाँ, अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं. हमारी लाइफ के शादी.com. Not bad. That's not a bad khitab at all. Abhimanyu? So, I mean, Sanya's reputation precedes her. Now, you realize that if there's Sanya in some movie, then kuch na kuch to hoga wo picture mein, with her choices that she's done. And so it was exciting, looking forward to working with her. And then it was as good as I imagined, super professional, fun on sets, very easygoing, no nakras. And there's just so much to learn with the dedication and the homework that she does to each character. And also, the most important thing is she makes it look easy. She flows. There's in a lot of people you see, they make a lot of effort, but the point is to make it look easy. That's when you're good at something. And ये इंटरव्यू कुछ और ही बनता जा रहा है. एक दूसरे की तारीफ. तो हाँ, ये एनर्जी के साथ में we went on set, and we created a little happiness which hopefully translates into onto the screen, and then it translates onto your hearts and souls. फिल्म जब हम देखेंगे तो अपना वर्डिक्ट तो हम आपको बताएंगे, but अभी what is the one thing that is special for you about this film, जिसके वजह से you want everyone to watch it? The one thing that you feel is the USP, starting with the director, Vivek? Well, it's an endearing romantic film, the kind we haven't seen for a long time, and it's a best date film. It's a best film to watch with your family during this festive season. It's even perfect film to watch it if you're alone and away from your loved one.
and it will transport to you a different world where you'll get to experience some brilliant culture and super performances, soulful music. Yeah, I hope people will like it. Sounds like a complete package. Sanya? As Vivek said कि काफी टाइम बाद ऐसी फिल्म आई है जो आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, और दिवाली के बाद बैठ के आराम से you can watch it with your whole family, क्योंकि बहुत ही लाइट हार्टेड, बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्यूट फिल्म है, and I'm sure people will love it. The last few years have been complex, stressful, and painful for almost everyone around. This film, the simplicity and the love that transcends will leave you happy. And I mean, और क्या चाहिए? And God knows we need You want to be happy, you want to be hopeful. At the end of the day, this is what this film is going to give you. So just watch it, be entertained, be happy, and be hopeful. Things will work out. Super. Things definitely will work out. Meenakshi, Sundaresh, we're looking forward to that. Thank you, guys. This was a pleasure. Thank you. Thank you so much. Likewise.